Bismillahirrahmanirrahim. First of all, welcome to this live session. I hope कि इस लाइव सेशन में आप लोगों को आने का कुछ ना कुछ जो है वो डेफिनेटली एडवांटेज होगा. मे बी देर आर अ लिटिल जो है ना साउंड इश्यूज थोड़े बहुत जो है ना वो हो सकते हैं, बट आई ट्राई टू कीप द मिनिमल इंशाल्लाह. एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द ये आपको सिर्फ कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकूं कि शायद आप लोगों में से कुछ लोगों की जॉब्स में एंड डेफिनेटली सब लोगों की पर्सनल लाइफ में जो आज का की जो लाइव सेशन है ये कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है. सो विल स्टार्ट विद अ वेरी ब्रीफ प्रेजेंटेशन जिसमें हम कुछ मोटी सी बातचीत करेंगे और उसके बाद हम जो है वो इंशाल्लाह विल स्विच ओवर टू प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, और हो सकता है कि हम इन बिटवीन भी कुछ जो है वो करते रहें, स्विचिंग करते रहें बिटवीन डेमो एंड द प्रेजेंटेशन. बट मेरी कोशिश होगी कि प्रेजेंटेशन एक ही दफा कवर हो जाए और उसके बाद हम डेमो के ऊपर चले जाएं. राइट जी. सो ओके, let me share my screen now. Okay, so I would need a confirmation whether my screen is visible to all of you or not. Anyone can just point it out in the chat. Okay, that's great. So we are in conclusion. That's very good. It means we don't have to cover anything. Really great. But somehow I was actually working on tweaking the presentation. That's why it ended at this base. मैं task बार अपनी जो है वो hide कर दूं so that ये जो है वो आप लोगों को तंग नहीं करे. Okay, let's go back to the start. So the topic for today is transforming AI, transforming finance with cutting edge generative AI. Generative AI आजकल हर तरफ जो है ना ये दौर दौरा है, हर तरफ बातचीत ही जो है वो generative AI की हो रही है. So I thought that maybe uh, how it can help in personal finance, how it can help in business finance will be really useful. So let's take a start. Before we actually get into it, just for the sake of repetition, yeah, at the cost of repetition, and for the sake of those who are not familiar with the terminology, I would like to revise or give you introduction to just three terminologies. What is generative AI? Generative AI are a set of artificial intelligence or machine learning and deep learning models that generate new content based on the one they have already seen. So the new content might sound familiar to the one that generative AI has already seen. So generative AI per se does not create new content, I would say. It actually tries to emulate whatever it has already seen. So what it does is it takes bits and pieces from various information that it has consumed during its training, combines it and presents it to you. So obviously, if it has seen, let's say, 100,000 faces, and it takes even few pixels from every one of them, and has the ability to rightly place those pixels. Let's say it can place the nose at the place of nose, it can place the eyes at the place of eyes, then the content that will result in the end will definitely look somewhat which is something that you have not already seen. So from that perspective, it is said to create new content, but otherwise it actually doesn't create new content. It actually generates, I would say, new content based on the one that it has already seen. Within the context of generative AI, we have models that can generate text, which are the most popular ones, such as ChatGPT, such as Gemini, Claude,
Then within WhatsApp, you now have Llama 3. And then images, let's say Midjourney and Stable Diffusion. Then they can generate videos. Let's just say the one model from OpenAI. Then there are others also. Then they can actually consume different kinds of data. They can consume text, they can consume images, they can consume files, and based on that, they can do a lot of good stuff that can be really helpful in their real life. Then the topic of today will be more focused on the large language models, and that's why I thought that it would be good to revise its definition. So the generative AI models that understand and generate text like humans, right? So the mathematical models that only work with the text are the large language models. And then finally, prompts, which we are going to see in more details, or also prompt the instructions given to the LLMs or any generative AI model in order to generate the kind of response that you expect. So, for example, if you tell an art generator, the Midjourney model, that you want to generate picture of a cartoon character sitting on a spare sitting outside on the body of a spacecraft and moving towards the moon, where the Earth and moon both are visible in the same picture. So it is going to generate you a picture. So that's actually the prompt. So we are going to define prompt in a better fashion in the coming slides. Right. Moving ahead. So next we have, what does generative AI offer for finance? This is very important. Why are we actually doing this? So generative AI has the potential to transform finance. It can actually do few things that surprisingly right now is in the realm of human beings. And I should actually point out that their jobs are at stake. If they do not scale up, if they do not know how to use at least AI, their jobs are at stake. So many organizations are already launching these sandbox LLMs for use inside your company. And there is a great chance that perhaps some of your companies already have the large language models installed within their ecosystem, and it is already being used. So these tools will be part of your everyday life sooner than you think. And they already are, actually. Now, any piece of text that you read most likely has at least some content that was written by AI. So what are some areas of application of generative AI? So for example, automated report generation, enhanced customer support through chatbots that you're already seeing. Then we have fraud detection and risk management. This is particularly related to finance. Then market analysis, forecasting, again, a finance area of application. Personalized financial planning, again, your own personal finance, and we are going to see its example right now. Now, specifically, if we talk about how the LLMs, not only generative AI, how the LLMs are used in finance, so natural language understanding and generation is essential for tasks like drafting documents, creating content, customer interaction, and let's say analyzing 100 pages report. Your boss comes to you and tells you that this is the risk analysis report of Mughal Steel. You need to analyze this and get back to me in, let's say, 2 hours. So it is very obvious that 2 hours are not sufficient to analyze any such report. Now, the point, your boss has a very difficult situation. Now, he wants it to be done in 2 hours, and so both of them are actually not possible. They are complementary to what is going to happen is that if all goes well, you'll be appreciated for your efficiency if you complete your job in 2 hours. But if, let's say, 6 months down the line, something goes wrong, and the report is analyzed in a detailed fashion at that time,
the one who signed the report and who actually stated that I have seen this, and according to my analysis, it doesn't contain any potential risks. So uh, your job might be on the line at that point. So natural language understanding and generation can actually help you in that area. Enhanced customer support, we have already seen. Data analysis and insight, very important. Again, it is related to report generation as well as reports analysis. Language translation. So on some occasions, you might need to actually have a conversation with someone who is not familiar with the English language. Then automation of the routine task is something that is being done every day in order to improve the productivity and efficiency. Let's just say a very small example. So suppose you are in a bank, and every day you receive checks from the checks to your customers, and you also receive checks on the mail. And now you need to actually verify the details, whether all the details in all the boxes are written correctly or not. So if you have a system that takes up the picture of a check and then identifies what all data was given, and it automatically fills the data on your behalf. So it fills the name, the account number, and the intelligent part of it, which is able to analyze. It also compares the signatures with the signatures that you have and gives you a verification whether or not it works. So you see that you have mitigated a large part of the risk using AI model. And you have improved your productivity, because earlier on, you had to type the name of the individual, the amount that he wants to withdraw, the account from which he wants to withdraw. You had to manually check the signatures, pulling up the records from your database, and then comparing it with the one presented on the signature. And then there would be some other requirements also. For example, the account might be tagged inactive. So you need to be careful while handling such things. Then there might be an account limit. Then the account might be tagged for personal withdrawals and etc. and so much and so forth. Okay, so as I said, you might experience some issue with the voice, but I'm trying hard to speak louder so that you can understand it better. My apologies if I'm not audible properly. Okay, moving forward. So the basic tool that we use in the large language models, as well as with any generative AI model, is prompt. So there are two terminologies: prompt versus prompting. So what is prompt? So a prompt is a cue or a stimulus that initiates or guides response or thought. So if I would try to explain it in Urdu, because audience is in Urdu over here. तो जब आपने लड़के को कोई चीज सिखानी होती है और उससे तो एक और वो किसी से फंस जाता है, तो एक तरीका ये होता है उससे उसका जवाब बता दें। अच्छा, उसके जवाब आपको ऑलरेडी पता हो। अच्छा, तो फिर आप क्या करते हैं? आप जो है ना उस प्रॉब्लम की डिटेल को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हार्डवेयर की शॉप पे जाते हैं, आपको एक पेंट जो ना वो अपने घर में करवाना है। वो पेंट येलो की किसी शेड में है, लेकिन वो ऐसा है जो कि येलो और ऑरेंज के दरमियान में है। येलो से ज्यादा मिलता जुलता है, ऑरेंज से कम सो आपके पास उसका जवाब नहीं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो हार्डवेयर एंड पेंट स्टोर वाला है, उसको कहते हैं कि अच्छा जी, मुझे ऐसा पेंट चाहिए। पेंट जो है, अब आप सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं। सो वो पेंट जिसमें कि जो आसानी से का कोई दाग लग जाए, सो दैट पुश यू इनटू द कैटेगरी ऑफ। के बाद आप कहेंगे कि अच्छा जी, मुझे उसका शेड इस तरीके येलो और ऑरेंज के दरमियान हो, लेकिन इट इज more kind of lemon than the orange actually. So ये हम दोनों के दरमियान में है, बट लेमन से ज्यादा मिलता जुलता है। और मुझे इतना पेंट चाहिए, जो लेट्स से कि एक वॉल है और उस 1 फीट बाय 14 फीट उस। सो अब ये जो इंस्ट्रक्शन एक्चुअली प्रॉम्प्टिंग, क्यूइंग,
give your queries in as much detail as possible. And sometimes आप जवाब तक पहुंचने के लिए you guide the process also. For example, आप एक बच्चे को 8 का टेबल सिखा रहे हैं, वो बच्चा जो है वो आपको टेबल सुनाते हुए कहता है कि 8 sevens are 56 एंड देन उसके बाद वो 8 sevens are 56 के बाद जो है वो रुक जाता है. He doesn't know the answer, and suppose you also don't know the answer. So what can you do actually? कोई इसका जवाब देना चाहेगा कि अगर जो है ना वो बच्चे को टेबल सिखाने हो तो वो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा उसका? यानी 8 sevens are 56 के ऊपर वो रुक गया है, तो 8 eights are कैसे सिखाएंगे उसे? जी anyone? चैट में लिखना है या no one wants to answer? Okay, let me जो है वो कट इट शॉर्ट सो दैट हम टाइम सेव कर सकें. सो उसका बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप बच्चे को ये बताएंगे कि 8 eights are is equal to, or 8 times 8 can be obtained by adding 8 to what is equal to 8 sevens are. So the child already knows what is 8 sevens are, so that's 56. And then you tell him that if you add 8 more to it, you will get the answers to 8 times 8. So आपने क्या किया कि आपको वो आंसर नहीं पता था, लेकिन आपको जो है ना वो एक तरीका पता था, तो आपने उसको मजीद जो है ना वो गाइड कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, मैं आज एक जेडी जो है ना वो बना रहा था सीनियर क्यूए इंजीनियर के लिए. वी नीड अ सीनियर क्यूए इंजीनियर. आई वेंट टू चैट जीपीटी, आई गेव इट अ प्रॉम्प्ट एंड द रिस्पॉन्स वाज नॉट लिक्विड. मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने उसके ऊपर जो है वो उसको फर्दर गाइड किया. मैंने उससे कहा कि आई नीड जेडी that's built around, let's say, automated testing and relates to some automated testing tools, unit testing, etc. So once I did that, I got a better answer. और मैंने उस चीज को फिर further improve किया based on my experience and then sent it to the company. So this is the example of a prompt. So an AI prompt establishes a communicative channel between a user and a sophisticated large language model, guiding the model to produce a specific type of output. Now, for example, if I could show you my chat window, I would, I was also generating some data for this exercise. So see, what I did is I asked, let's say suppose, what does generative AI offer for finance? Give me 5 points. So it gave me 5 points. Now these 5 points are written in a specific fashion. So there are hashes, there are double stars, there's 1, 2, etc. Now the problem is that if I copy this to PowerPoint, I will have to do some effort removing these hashes and double stars, etc. So I could do that in PowerPoint as well. But instead, I said remove formatting like hash and star. And you see, now it has generated the output जिसमें कि जो है वो hashes or stars नहीं. So this is how I actually guide ChatGPT to provide me the answer in the format that I would want. So prompting, on the other hand, is the process of designing and refining the everyday language, text, voice prompts for use in large language models. So basically, prompt is a noun. Prompting is a verb, is a process, is a procedure.
इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहते हैं कुछ जगहों के ऊपर. आई वुड से दैट्स एग्जैजरेटेड. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इज मैं चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, सो आई होल्ड इट वेरी सेक्रेट टू माई सेल्फ, और इतने छोटे से काम को मैं इंजीनियरिंग कहना जो ना वो गैर मुनासिब समझता हूँ. हाउएवर, still, the terminology is there. Prompt engineering is designing the inputs you enter into AI models to get the desired output quickly and accurately. So this is the same thing. Now, let's say this is as an example. अब आप ये देखिए कि it's very good. Explain prompt engineering. So he wants it to explain, first of all, not define. Like, I'm a 5-year-old. So आपने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया. आपने ये कह दिया कि एक 5 साल के बच्चे को समझाना है. अगर आप ये कहते हैं कि जी एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ही वुड हैव द सिस्टम वुड हैव एक्चुअली जो है ना वो यूज्ड काइंड ऑफ रिस्पांस जो कि बहुत ज्यादा जो है ना वो हाई फाई होता और मे बी इतना इफेक्टिव ना होता. सो यू कैन थिंक दैट द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स चूंकि वो ह्यूमन डेटा के ऊपर जो वो डिजाइन है और कंटेक्चुअलाइज्ड इंफॉर्मेशन जो है वो कंज्यूम करते हैं, सो दैट इज व्हाई they behave like you do. उनका reasoning जो है, उनका breaking down the entire question into various parts and then relating various parts with one another and on the basis of that output generate जो वो करते हैं, वो जो है ना वो चूंकि ह्यूमन डेटा के ऊपर बेस्ड है तो वो उनकी रीजनिंग भी ह्यूमन बीइंग की तरह की है. सो आप यूं समझे कि जिस तरह से आप एक बिल्कुल आ, ऐसा बंदा जो कि पहली दफा शहर में आया है, उस पहली दफा में शहर में आने वाले बंदे को सब कुछ आता है लेकिन उससे उस शहर का पता नहीं है, तो आप उसे जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि पहले तुमने यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर वो बस पकड़ के उधर जाओगे, फिर उस जगह पे तुम्हें सुजुकी मिलेगी, सुजुकी से फलां जगह पे आओगे. सो द वे यू एक्चुअली डू दैट, उसी तरह से अगर आप जीपीटी के साथ बिहेव करेंगे, इट इज गोइंग टू गिव यू सम गुड रिस्पॉन्सेस. सो प्रॉम्प्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है कि प्रॉम्प्ट जो है वो एआई को क्यों करता है टू गिव यू आउटपुट्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह. एंड सिंपल प्रिंसिपल गार्बेज इन गार्बेज आउट जो कि जो है वो आपका एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल हुआ करता था, दैट आल्सो अप्लाइज टू प्रॉम्प्टिंग. सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो क्या ये एक प्रोफेशन है या अब एक एसेंशियल स्किल है? नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि हमने अचानक से प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्टिंग पे इतना क्यों एम्फसाइज करना शुरू कर दिया. So let me briefly give you the context again. The problem is that the essential tool through which you play with the large language models is prompting. तो अगर आपको prompting आती है तो आप जो है वो तब उससे relevant output ले सकते हैं. तो हम इसको shift करते हैं थोड़ी देर के अंदर फाइनेंस के ऊपर. अगर आप ये देखें कि जी स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज के हवाले से, लेट्स से कि आप जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अप्लाई कर रहे हैं इन मेडिकल फील्ड, तो ऑब्वियसली उसको यूज करने वाला भी कोई मेडिकल प्रोफेशनल होना चाहिए. तो उस सूरत पे इट विल बिकम अ प्रोफेशनल. बट अगर आप नॉर्मल जो है ना वो जिंदगी के अंदर देखते हैं, लेट्स से कि आप व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो आपके पास अब मेटा का लावा 3 मॉडल मौजूद है. आप जाते हैं जो है वो ट्रैवल करने के लिए टू न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में आप जो है वो कहते हैं कि जी आपको कोई जगह तलाश करनी है और वहां तक का के लिए इजीएस्ट जो है ना वो लोकेशन ढूंढना है कि जी इजीएस्ट वे ऑफ कम्यूट जो है वो क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा, टाइम कितना लगेगा, और उसके ऊपर जो है वो आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा. सो यू कैन जस्ट टेल Llama 3 that I'm standing at this place. I need to go to this place. I have this much time. What type of transport should I take? How much will it charge me? How much time will it take? And how much is the total distance? And it is going to tell you. So from that perspective, it is a skill जो कि अब हर बंदे को आनी चाहिए अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा जो है वो करना चाहते हैं. It's just like कि आज से few years ago, शायद आप लोगों में से कुछ और लोगों ने भी अपने वालिदैन के साथ एक्सपीरियंस किया होगा कि वो कहते थे कि हमें ये जो मोबाइल है, टच मोबाइल, इसकी समझ नहीं आती, हमें वो पुराना बटनों वाला ला दो. बट देन इट बिकेम सो परवेसिव कि वो बटनों वाला खत्म ही हो गया और अब आपको बटनों वाला ढूंढने के लिए एक्चुअली जो है ना वो बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है. सो उसका अल्टरनेटिव क्या है कि तमाम लोगों ने
अपने वालिदैन को टच फोन इस हद तक कम से कम यूज करना सिखा दिया है कि वो कॉल रिसीव कर ले, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दे, जिसका कि आज से जो ना वो 5 साल पहले कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, 5-7 साल पहले तक। फिर उसके बाद आपने उनको ये सिखा दिया कि यूट्यूब वगैरह कैसे लगाना है, सो दैट इफ दे आर गेटिंग बोर्ड नोबडी इज टॉकिंग टू देम, सो देन दे कैन हैव एटलीस्ट some company in the form of YouTube. So from that perspective, it's a skill. Continuous learning and adaptation. Yes, it is a profession as well as skill. So for example, if you're talking about some specific profession, तो जो है ना वो फिर प्रोफेशनल आप जो है ना ये कंसिडर किया जाएगा। बट अगर आप जनरल पर्पस स्किल लर्निंग कर रहे हैं फ्रॉम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो आप जो है वो स्किल की ढूंढ लें। सो द प्रॉब्लम इज, जो मैं चीज हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉम्प्टिंग या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर से ये डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं। इफ इट्स अ हाईली स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट, इट कैन बी अ कंप्लीट प्रोफेशन, इट कैन बी अ कंप्लीट प्रोफेशन, यानी इट कैन गिव यू अ कंप्लीट जॉब। बट अगर आप इसको एक जनरल पर्पस रोल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट विल बी काउंटेड एज अ स्किल एंड यू माइट स्टिल गेट, स्टिल मोनेटाइज इट, बट उसकी कंपनसेशन बहुत अच्छी नहीं होगी। Now, some ways to effectively prompt. First of all, be clear and specific. जितना क्रिस्प सवाल होगा, उतना क्रिस्प जवाब होगा। ठीक है जी। सो अनबिगुअस, और उसमें बताएं फॉर्मेट, टोन एंड डिजायर्ड आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, मैंने उसको कहा कि मुझे हैशेस एंड स्टार्स नहीं चाहिए। ठीक है जी। टोन बताना पड़ेगा, यू वांट द सिस्टम टू बिहेव एज अ टीचर। जिस तरह उसने कहा कि जी एक्सप्लेन इट टू एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लाइक आई एम अ 5 ईयर ओल्ड बॉय, तो वो उस हिसाब से टोन चेक करेगा। ठीक है जी। डिजायर्ड आउटपुट, जिस तरह के मेरी आउटपुट जो है ना वो क्यूए की जॉब डिस्क्रिप्शन में उसने ठीक नहीं दी, तो फिर मैंने उसे थोड़ा सा गाइड किया कि मुझे जो है ना वो ऑटोमेटेड टेस्टिंग की तरफ जो है ना वो लेकर जाओ और उसके टूल्स की बात करो। ठीक है जी। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, इनको आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है जी, कि आगे पीछे की कुछ डिटेल्स भी बतानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने सीनियर क्यूए इंजीनियर के लिए कहा, तो मैंने कहा कि जी आई एम assume as if you are the CTO of a company and you want to hire a senior QA engineer, and you would like to him to fulfill this role for your upcoming software development products, to generate a job description for that. तो जब मैंने वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया, तो इट स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दैट सीटीओ, और फिर उसने उसको फॉर्मेट और टोन उस तरह से। देन या ना वो अवॉइड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है जी। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि जी जिसका कुछ जना कोई ऑब्जेक्टिव जवाब ना हो, सब्जेक्टिव जवाब। फॉर एग्जाम्पल, आप इससे पूछना शुरू करते हैं कि शुड आई वेयर ग्रीन और ब्लू कलर शर्ट इन द नेक्स्ट पार्टी। अब उसको क्या पता भाई कि आप की अपनी चॉइस क्या है, उस पार्टी का थीम क्या है, ग्रीन के कौन से शेड आप यूज कर रहे हैं, आपके कल्चर में कौन सा जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो एक्सेप्टेबल है। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछे। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखें, विच एक्टिव कस्टमर्स आर द रिस्किएस्ट, उसकी जगह जवाब देखें। लुक एट द हिस्टोरिकल ऑन टाइम पेमेंट डिटेल्स, which 5 customers with open account balances are most likely not to pay। बात वही पूछी गई है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दिया गया। पहले तो उसे कहा गया कि हिस्टोरिकल ऑन टाइम पेमेंट डिटेल देखो। ठीक है जी। उसमें से 5 कस्टमर्स निकालो जो कि एक्टिव भी हैं, जिनका ओपन अकाउंट है, एंड दे आर नॉट मोस्ट लाइकली टू पे। रिस्की की डेफिनेशन दे दी, मोस्ट लाइकली नॉट टू पे। ठीक है। सो व्हेन थिंग्स टू कंसीडर व्हेन प्रॉम्प्टिंग, देयर आर 3 थिंग्स जो हम बार बार कह रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पे अभी हमने कहा कि जी टोन, फॉर्मेट, टोन, डिजायर्ड आउटपुट। तो सबसे पहले टोन। ठीक है जी। फॉर्मल है, कन्वर्सेशनल है, डेटा ड्रिवन है, सिंपल है, विटी है, परसुएसिव है। क्या मतलब किस टोन में वो बात करें। विटी फॉर एग्जांपल,
कि कोई थोड़ा सा, लेट्स से कि आप एक ह्यूमरस स्पीच लिख रहे हैं, तो यू वुड लाइक कि जी आप उसको बताएं कि ये बेटी जो है ना वो मटेरियल होना चाहिए। कोई पोइटिक टच देना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसको वो बताएंगे। देन फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट होगा? ईमेल, बुलेट, नंबर लिस्ट, टेबल, न्यूज़लेटर, लिमिटेड टू 30 वर्ड्स। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये जो इसके लिए एक दो स्लाइड्स के लिए कुछ डेटा जनरेट करते हुए, आई आस्क्ड इट कि जी मुझे गिव मी 5 पॉइंट्स एंड रिस्ट्रिक्ट एवरी पॉइंट टू मैक्सिमम 20 वर्ड्स। तो मैंने ये, सो व्हाट हैपेंस इज इट जनरेट्स बेटर आउटपुट। देन बिल्डिंग ऑन योर प्रॉम्प्ट्स, तो समराइज दिस डेटा इन एन ईमेल दैट आई कैन। तो पहले आप क्या करें, एक पूरा जो है ना सिनेरियो बिल्डअप करते चले जाए, डेटा एनालिसिस किया, आर्गुमेंट्स बिल्ड किए, उसके अंदर फोरकास्टिंग की, और फिर आखिर में आके कहा कि नाउ बिल्ड इट इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो इंक्लूड द वर्ड्स इनोवेटिव एंड रिलायबल, फॉर एग्जांपल कि जी अब आप जो है ना वो ऐसी बातचीत करें जो कि जो है ना वो स्टैंड करती है। प्रॉम्प्ट की कैटेगरीज जो कि फाइनेंस में यूज हो सकती है वो क्या है? लेट्स से समराइजिंग, concise summary of long text or data or a collect data. For example, prompt can summarize in performance during financial year 20 for our company, highlighting the key revenue। ये भी हम टेस्ट करके देखेंगे इसको। अच्छा, एक्शन कर सकते हैं आप, how will 5% decrease in COGS impact gross margin of our for next quarter? So देखिए ये, although it's a language model, ये generate करता है, but it is able to make mathematical predictions of। ठीक है जी, डेटा आपने कहा आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट वेरिएंस बिटवीन बजटेड एंड फोर्स। ठीक है, दीज आर सम टेक्निकल टर्म, बट ये वो लोग समझते हैं जो कि एक्चुअली आइडेंटिफाई 3 sources of my revenue that the minimum, yeah, the most stable kind of income। अब ये जवाब, brainstorming new business ideas, this is something that I have done myself कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैंने बिजनेस प्रपोजल इसको दी और कहा कि जी इवैल्यूएट how much chance success, and it said कि अच्छा क्रिटिसाइज करता है और फिर आपको बताता है ये स्ट्रांग एरियाज हैं। So using the last 2 years of historic some potential actions to improve writing management reports, ये तो बड़ा आसान है। फॉर्मेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग या रीस्ट्रक्चरिंग डेटा इन, ठीक है, तो ये आपको करना है। सो दिस इज समथिंग, आखिरी वाला रीफॉर्मेटिंग, दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दिखाता हूँ कि हाउ कैन इट बी एक्चुअली डन। सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। अगर आपका इससे मुताल्लिक कोई सवाल है तो मुझे बताएं, हम आगे वी कैन डू इसके, वी कैन गो टुवर्ड्स सम। जी, नो क्वेश्चंस? ओके, दैट्स ग्रेट, वी हैव नो क्वेश्चंस। सो आई वुड नाउ, आई हैव already have some financial statements, इन financial statements को मैं यूज करूंगा कुछ जो है वो चीजों को करने के लिए, और लेट्स सी हम उसमें से क्या डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता होगा कि जो आपके पास नॉर्मल जो चैट जीपीटी आता है, वो सिर्फ आपके साथ टेक्स्ट जो है ना वो के ऊपर बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई चैट डॉट ओपन एआई डॉट कॉम को अगर मैं ओपन, तो ये नॉर्मल चैट जीपीटी जो है इसको ओपन कर देगा, और इसमें आप यहाँ पे जो है कुछ अटैचमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है जी, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, क्या क्या कर सकते हैं आप। मैं एक ये एक अपलोड कर देता हूँ और इसके साथ इसको ये कहता हूँ एंड समराइज, ये पहला हमारा एरिया देखा, समराइज एंड so this is a very vague kind of start। अच्छा, ये देखिए आप इमीडिएटली जो है ना वो उस फाइल को मुझे समराइज करके दे दिया।
So this is something else that I do, जो कि मैं since my area of expertise is also embedded systems, तो ये मैं embedded system से related हूँ और this is really cool stuff. और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं एक और जनरेटिव एआई के साथ साथ एक और चीज जो है वो हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करें दैट वुड बी रिलेटेड टू embedded systems as well as the PLCs, the programmable logic controllers, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज होते हैं उसके साथ भी शायद हम एआई जो है उसके इंटीग्रेशन को जो है देखेंगे अच्छा लेट्स सपोज आई एम अ टीचर सो मैंने ये अपने स्टूडेंट्स को ये दिया है एंड आई जनरेट सीक्यूज डॉक्यूमेंट सी कि ये कैसे जो है वो करते हैं सो नाउ यू सी ये कितना ओके सपोज generate the MCQs at difficulty level 10, where difficulty A2, where means lowest, 10 means highest. Questions should be logical and not mere. क्या करते हैं ये देखिए आप now it really good stuff. In an application with multiple serial communication simultaneously, LPC 2148, this would be and why. So this is something. ठीक है जी. So summarizing and थोड़ा सा हमने देख लिया. I would keep the presentation open और आके मैं करना चाह रहे थे इसमें. Okay, so I have a making predictions. Okay, let's just try to upload a very heavy kind of file. I don't know whether it can actually consume such file or not. So this is the annual report. Okay, so it has uploaded. So let's just make a prompt. What was the revenue of the as per this print and what expect considering same rate of growth. Okay, so any one of you who is actually amazed to see this, ये दिखाऊं तो ये financial this is 38 pages long और इसमें से सिर्फ ये डेटा अगर मैं आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए दे दूं तो ये एक्सट्रैक्ट करते करते आपको जो ना वो you would require some science. So and who actually got amazed, please raise your hand. At least I'm due to those people जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया. Okay, so we have some appreciation. This is very important. ठीक है जी. ये जना वो खुदाशनासी और खुदशनासी वो बड़ा ये बड़े टॉपिक्स हैं और वो ये बड़ा जरूरी है. Okay. Next, let's just say next we try to extract some data. ठीक है जी. ओके मैं इसमें वही प्रॉम्प्ट यूज कर लेता हूँ जो प्रॉम्प्ट जो है ना वो हमने अपनी प्रेजेंटेशन. आई डोंट नो वेदर इट कैन गिव एन आंसर और नॉट.
को रेफर कर रहा। और अगर मैं इसे पूछूं कि जी व्हाट डज इट आंसर, ये देखिए पेजेस 39 to 40। इसको हम ग्राफ जनरेट करा सकते हैं। ओके, नाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग न्यू बिजनेस आइडियाज। ओके जी, रिकमेंडेशन देखिए जी, वर्किंग कैपिटल के लिए उसने दे दी, इस तरह से करें। ठीक है जी, ये देखिए हिस्टोरिकल एनालिसिस किया, करंट क्या है, स्टॉक इन ट्रेड क्या है, ट्रेड डेट्स क्या है, अब क्या करें, करें रिसीवेबल कलेक्शन ऑप्टिमाइज करें वगैरह वगैरह। ओके, लेट्स से reformatting. I have the menu of a, this is the menu of a company, और मैं इसे ये कहता हूँ कि जी of a restaurant, entire menu with its 2 column Excel file. The items should be categorized follows. Rupee 100, crunch 250, one cheesy pasta. Okay, let's just see what it does. कि पीडीएफ इसमें से ये रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। ठीक है जी, सो ये मेरी जो है ना वो लिमिट होगी, लेकिन मैं इसको आई हैव, so I have the access available over here. I can do it here. So let me use the same prompt. Let's see what happens now. ओके, सो ये चूंकि प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में आपको जो है ना वो कुछ ट्वीक्स करनी पड़ती है, ट्वीकिंग की इजाजत होती है एक्चुअली।
तो अब आप ये देखिए कि अगर मैंने एनालिसिस रन करना हो मेरे लिए कितना आसान है ना, बजाय इसके कि मैं उस पूरे मेन्यू को दोबारा खुद से टाइप करूं, मैंने इसको रीफॉर्मेट कर दिया ना। आई कैन आस्क इट कि जी गिव इट टू मी एज अ CSV फाइल। ओके, सो ये मुझे CSV फाइल जनरेट कर दे। तो ये आपने कॉपी पेस्ट करना है और खुल जाएगा। सो आई ऑलरेडी डिड दैट एक्चुअली, और ये मैंने while preparing for this I was doing it. Let me show you the output. So you see कितना अच्छा ये इसने आउटपुट जो है ना फॉर्मेट कर दिया मुझे। So it has category, item, price. So it has wings, exactly उनके नाम उनकी prices, fries नाम उनके prices, pizzas नाम उनके prices। ठीक है जी। Then another dish, then burgers and so on and so forth. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो डील्स हैं, देखें डील्स के अंदर जो है ना वो, अगर कोई चीज इसको अलहदा से भी नजर आई है लिखी हुई तो वो उसने बता दिया, अदरवाइज वो डील चूंकि पिक्चर की फॉर्म में है इट्स नॉट विजिबल एक्चुअली। ठीक है, आई कैन डू अ फर्दर एनालिसिस। ठीक है जी, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल प्राइसेस of the ingredients, these items, what would be my against these thing prices? लेट्स जस्ट, मेरे ख्याल में ये नहीं आंसर करेगा, इसलिए कि अगर मैं इसको कॉस्ट ऑफ दीज आइटम्स जब तक नहीं बताऊंगा तब तक ये नहीं करेगा। बट सी व्हाट इट डज। ये देखिए, अब उसने कह दिया कि ये, लेकिन आई कैन नॉट, वो कहता है प्रोवाइड द एक्चुअल कॉस्ट इट एंड टू गिव यू मोर एक्यूरेट। ठीक है जी, ये ना वो, ये इसकी एक लिमिटेड। सो that's it that I wanted to say. I hope it was interesting and I hope you can use it in your personal life. ठीक है, आप इसमें जो है वो अपनी डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालें, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसे के एनालाइज करके मुझे चीज के ऊपर होता है और व्हाट आर द वेज और इट्स ठीक। सो दैट्स इट। शेयर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो बताएं। टू एक्सट्रैक्ट सम डेटा फ्रॉम, नॉट राइट नाउ, उसकी वजह ये है कि चैट जीपीटी इस तरह से काम नहीं करता है। लामा 3 को आप यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रैग। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन इज नॉट पॉसिबल कि आपके लैंग्वेज मॉडल्स हर वक्त अप टू डेट हो। तो लेट, तो आज 1 घंटे बाद ही जो एक डेटा जनरेट होगा वो डेटा का, इस चीज को मिटिगेट की गई है जिसे रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। जनरेशन क्या करता है, वो वेब स्क्रैपिंग करके जो है वो देता है मॉडल को, और वहां से फिर जो है ना वो मॉडल से एनालिसिस करवा लेता है। सो उसके ऊपर आपको एक रैपर जो है ना वो खुद से लिखना पड़ता है। हाँ, और some questions, 10 minutes, क्योंकि we have already consumed 1 hour. We can spend 10 minutes on questions or it off. Okay, so looks like there are no questions. Okay. Okay. So there are no questions. So that's रियली अमेजिंग। अगर आप लोगों को जो है ना कुछ चीजें समझ, और एआई ऑप्स में ये कवर किया है। एआई ऑप्स में हम डीप लर्निंग तक जो है ना वो गए हैं। एक्चुअली जनरेटिव एआई जो है ना, जनरेटिव एआई को यूज कर, जैसे मैंने कहा, स्किल एंड इन सम केसेस इट्स अ प्रोफेशन।